are starting with ulcerative colitis. It is an inflammatory bowel disease. Although we have studied yesterday also that it is a form of one of the form of an IBD, and it occurs when the lining of the large intestine, that is basically the colonial part of the body, gets inflamed, in which the rectum is also involved. So most probably in the ulcerative colitis, there are two parts of the body which is being affected, that is your colonial part as well as the rectum part. In both of these parts, there is inflammation. A large inflammation is monitored in both of these areas. Now, this inflammation produces tiny sores called ulcers. As the term is saying that it is causing ulcerative colitis. So basically, during this stage, the inflammation, along with the inflammation, there will be formation of a tiny sores called ulcers on the lining of the colon. So colonial part में colon के इंटरनल लाइनिंग के अंदर जो है अल्सर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन के along with inflammation there will be a formation of the sores in it. It usually begins in the rectum and spreads upward. Most probably जो disease की growth होती है या disease का जो onset होता है, it starts from the rectum part and then it moves upward to the colonal part. So the starting of an ulceration and the inflammation always starts from the rectum part and then starts appearing to the upper part, leading to the entire colon. So it can involve even the entire colon of the intestine. Now, who are the prone people जिसको ये diseases हो सकते हैं? Now, ulcerative colitis, although we know there is no justified reason because it is an idiopathic form of a disease. कोई proper justified reason नहीं है कि ये disease क्यों होती है, किस form में हो रही है, but we say that some particular people are more prone for this disease, and this is first is your age group. Now, the majority of the people with ulcerative colitis are in the age group of 15 to 35 years of age. So most probably ये जो disease occur होती है ये young age में ही है. It is not an disease of children, or we can say of an old age, but it occurs most probably for in the adolescent or in young age. And in children, if children are affected in the ulcerative colitis, that is, it will be some of the genetic reason if in them ulcerative colitis will occurring, then they must be having a growth failure, because we have studied that IBD leads to a severe malnutrition, and because of that malnutrition, there will be a growth failure will be seen during this stage. So most probably people of 15 to 35 years of age जो है वो ज़्यादा affected होते हैं ulcerative colitis से. But if it is occurring at a younger age in the children also, then we will see a growth failure will be monitored. And if it's occurring at an adolescent age also, 15 years old, so obviously adolescent may be जो उनके normal functions हैं, because during adolescent also there is a growth spurt is being monitored over here, so that will also be altered, या फिर वहां पे भी जो growth में जो changes आने हैं वो भी delayed हो सकते हैं because of the ulcerative colitis. The next age is your gender influence. The next factor is gender. So males are most prone to ulcerative colitis. Ulcerative colitis mainly males में जो है ज्यादा देखने को मिलता है as compared to the females, and females में Crohn's disease ज्यादा frequent होता है. So this is one of the difference which is being monitored, that is a gender influence is monitored during an IBD disease, that ulcerative colitis is more common in males as compared to the females, and in Crohn's disease it's just opposite, that females suffer from more form of your chronic disease as compared to the ulcerative colitis. The next who are these prone is the people who take a lot of stress. जो stress को handle नहीं कर पाते उन persons में जो है most probably stressed out person में ज्यादा देखने को मिलता है, that is long term perceived stress. जिनको ज्यादा देखने को मिलता है, जिनकी बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा फील किया जाता है, they increases the risk of exacerbation over a period of months to years. जो लोग स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर पाते और जो स्ट्रेस को बियर नहीं कर पाते इजीली, वो मंथ और लॉन्ग टाइम तक जिनको स्ट्रेस जो है वो बियर करते हैं अपने ऊपर और उसको नहीं ओवरकम कर पाते, देन टिल मंथ्स टू इयर्स जो है वो स्ट्रेस को अपने अंदर ही अंदर जो है लेकर बैठे रहते हैं, या डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन पेशेंट्स जो हैं उनके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस एक कॉमन जो है वो प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस ओनली द
जो नॉर्मल फंक्शनिंग है कोलोन की या रेक्टम की वो डिस्टर्ब हो जाती है, इन्फ्लामेशन अकर हो जाती है और वो बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसको इफेक्ट करना शुरू कर देती है। सो मेजरली अल्सरेटिव कोलाइटिस या तो 15 to 35 ईयर्स की एज में देखने को मिलेगा। मेल्स में ज्यादा प्रोन होता है एंड द पर्सन हु टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेने वाले पर्सन में भी ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। नाउ वी सी व्हाट इज द etiology, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड the occurrence of this disease. Now, although it is an idiopathic disease जिसका कोई प्रॉपर हमारे पास कॉज नहीं है, अभी तक कोई जस्टिफाइड कॉज क्रिएट नहीं हो पाया है या सर्च नहीं हो पाया है, बट वी कैन से दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एन जेनेटिक ऑटो इम्यून फैक्टर, दैट इज बॉडी के अंदर ही जो बॉडी की इम्यूनिटी है, ऑटो इम्यून है, वो डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लामेशन कॉज हो रही है और इन्फ्लामेशन जो है फर्दर इन्फेक्शन फॉर्म में जो है बॉडी को कॉज कर रही है या अल्सर्स कॉज करना शुरू कर देती है। सो बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एन ऑटो इम्यून डिसीज। तो ऑटो इम्यून फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर की बॉडी जो है कुछ रीजन की वजह से जो बॉडी की फाइटिंग एबिलिटी है, इम्यूनिटी है, वो कम पड़ गई है और उसकी वजह से जो है ये डिजीज ओवरकम हो जाती है। All the exacerbations are more likely during the conditions of mental conflict as well as emotional stress. और ज्यादातर यही देखा गया है ulcerative colitis के पीछे रीजन that the persons who cannot overcome the mental conflict या फिर इमोशनल स्ट्रेस, जो पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड रहते हैं या फिर जिनकी बॉडी जो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, मीन्स दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, क्यों उस चीज को क्या हो रहा है, किस फॉर्म में उसको ओवरकम करना है, या छोटी छोटी बातों को जो है बहुत डीपली उसके मीनिंग्स फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में हर समय रहता है। उन लोगों में जो है देयर इज मेजर चांसेस दैट दे लूजेस देयर ऑटो इम्यून फैक्टर्स या बॉडी की अपनी सेल्फ इम्यूनिटी लूज करना शुरू कर देते हैं और उनकी बॉडी के अंदर ये साइंस देखने को मिल जाते हैं। द अदर रीजन बिहाइंड इट कैन बी एलर्जी टू सर्टेन फूड, स्पेशली मिल्क। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, तो समटाइम्स ये भी देखा गया है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट्स हैं जिनको मिल्क जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, सेम वैसे ही सिम्टम्स अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट्स में भी देखे जाते हैं, दैट इज दे आर एलर्जिक टू अ मिल्क कंपोनेंट्स। जो मिल्क के अंदर जो फैक्टर्स हैं वो उनको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, मिल्क उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऑल्दो उनकी बॉडी के अंदर लेक्टोज शुगर जो है उसको डाइजेस्ट करने वाले लेक्टेज एंजाइम्स प्रेजेंट है, बट द बॉडी इज एलर्जिक टू सम कंपोनेंट्स ऑफ द मिल्क और उसकी वजह से भी जो है ये डिजीज डेवलप हो जाती है। सो वी कैन से एलर्जी टू सर्टेन फूड, स्पेशली मिल्क, may also be a factor of in predisposing the disease। तो उसकी वजह से भी ये डिजीज जो है वो डेवलप होती हुई मॉनिटर की जा सकती है इन द पर्सन आर सफरिंग फ्रॉम ulcerative colitis। So there are two justified reasons which has been found, that is first is the autoimmune disease, that is the disease is occurring only and only because of the autoimmune factors जो है वो body के disturbed हो गए हैं because of the mental conflicts or the emotional stress, and the other reason behind is that it can be because of the allergic reactions which are occurring in the body. Now, what are the symptoms of ulcerative colitis? The common symptoms are, first is mild crampy abdominal pain or discomfort. Along with that, there will be an urgent need to defecate several times a day. So, the persons who suffer from ulcerative colitis, they have a stomach pain, cramps फील होती है, क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होगा, एंड जब वो पेन स्टार्ट होगा एट दैट टाइम ओनली दे नीड टू डेफिकेट सेवरल टाइम्स, अर्जेंट उनको नीड फील होती है, जैसे ही क्रैम्प फील होगा स्टमक के अंदर दे फील टू हैव डेफिकेशन। नेक्स्ट इज डायरिया अकम्प्लीड बाय रेक्टल ब्लीडिंग। सो देयर विल बी अ डायरिया, जो स्टूल्स जो पास होंगे, डेफिकेशन जो होगा दैट विल बी अ लूज स्टूल, एंड अलोंग विद दैट देयर विल बी ब्लीडिंग फ्रॉम द रेक्टल पार्ट। सो रेक्टम पार्ट जो है वो ज्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, अल्सर्स हो जाते हैं वहां पे, तो उसकी वजह से देयर विल बी ब्लीडिंग इन द along with the diarrhea. The other symptom is the weight loss, dehydration, fever, anemia, and general delivery. That is the person, because there will be less intake of the food, फूड पर्सन जो खा रहा है, खाते ही उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और
डेफिकेशन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा, साथ ही साथ वेट लॉस होने का रीजन ये भी है क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है बॉडी से, सो देयर विल बी अ चांसेस ऑफ वेट लॉस, डिहाइड्रेटेड बिकॉज फ्रीक्वेंटली स्टूल्स पास कर रहा है तो ऑब्वियसली वाटर और इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, फीवर बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन, anemia because of the blood loss as well as general deliberation, that is fatigueness feel करना शुरू कर देता है person. Then edematous and hypermeric mucosa seen in the early stages. That is, this is the mucosa, hypermeric mucosa. A lot of mucus is being excreted from the stool. Stool जैसे ही जब पास होता है, person पास करता है, तो stool पास करने से पहले बहुत सारा जो है हाइपरमेरिक मीन्स कॉन्जुकेटेड जो है म्यूकस भी सिक्रीट होता है, गंदा सा म्यूकस जो है वो डेफिकिएट होता है in the early stages, and in later stages there will be seen that there will be electrical bleeding, और जो stool पास हो रहा है, जो defecate कर रहा है person, वो बाद में पास होगा. Before passing that there will be a lot of mucus will be excreted from the PSS. And in severe disease, necrosis as well as frank ulceration of the mucosa occurs. And sometimes जब डिजीज सीवियर कंडीशन में हो जाती है तो वहां पर उस समय जो है नेक्रोसिस देखने को मिलता है, मीन्स जो रेक्टम पार्ट है वो अंदर से टोटली ऐसा लगेगा कि पूरी क्रैक्ड हो चुकी है, नेक्रोसिस हो चुकी है, टिश्यूज जो है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, अल्सर्स जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, एंड देयर विल बी अ फ्रैंक अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोसा अकर्स, दैट इज जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो पूरी अल्सर से फिल्ड अप हो जाती है in a severe condition. If it is a severe condition, then there will be total जो पूरा रेक्टम पार्ट है और जो पूरा कॉलोनियल पार्ट है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन तो दिखेगी ही नहीं, पूरी उस एरिया में जो है अल्सर्स देखने को मिलेंगे. सो दिस इज द मेजर सिम्टम्स व्हिच आर बीइंग मॉनिटर्ड ड्यूरिंग द अल्सरेटिव कोलाइटिस. Next, let us see what are the dietary risk factors for the development of disease. हम ये तो बोल रहे हैं कि पेशेंट में जो है डिजीज हो रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन है कोलोन में, रेक्टम पार्ट में, और सिम्टम्स क्या है, बट what are the other reasons which can also lead to ulcerative colitis, या फूड का इनटेक की वजह से, रॉन्ग फूड हैबिट्स की वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस कैसे डेवलप हो सकता है. So let us see about that how dietary factors can also lead to this disease. First is if a person take a very high intake of a meat, particularly the red meat and the processed meat, because ये जो फैट है ये बॉडी सॉरी मीट है, इट इज अब कॉम्पोजिशन, रेड मीट जो है हम वैसे भी अवॉइड का जाता है बिकॉज इट इज वेरी रिच इन ट्रांस फैट्स एंड हाई सैचुरेटेड फैट्स, और इस फैट को जो है डाइजेस्ट करना बॉडी के लिए इतना इजी नहीं होता है. सो इफ अ पर्सन टेक्स अ लॉट ऑफ दीज मीट, सो बॉडी उसको डाइजेस्ट ना करके उसकी अगेंस्ट जो है इंफ्लेमेटरी फैक्टर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम कॉज हो सकती है और बॉडी में जो है ऑटो इम्यून फैक्टर्स जो है बॉडी के डिस्टर्ब हो सकते हैं. अनदर रीजन इज हाई अल्कोहल इनटेक. समटाइम्स अल्कोहल भी जो है वो, although we say that alcohol directly liver को इफेक्ट करती है, but because of the higher intake of alcohol, inflammatory factors जो है बॉडी में ज्यादा इंड्यूस्ड हो जाते हैं, जो फर्दर बॉडी की जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ओवरकम नहीं कर पाती है, और उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर इन्फ्लामेशन और अल्सर्स अकर हो सकते हैं. The other reason is your high sulfur diet. If a person consumes a lot of food in which the sulfur content is very high. Now sulfur डायरेक्टली कोई भी पर्सन जो है डायरेक्टली सल्फर नहीं खाता है, बट दे आर वेरी वेरियस फूड प्रोडक्ट्स जिसके अंदर सल्फर इनडायरेक्टली होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड, एंड दीज आर अ लॉट ऑफ कंपाउंड कंजप्शन ऑफ योर ब्रोकली, your onion, garlic, even though cabbage, cauliflower, Brussels sprouts. So these are some of the compounds या एलियम फूड्स जो होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं या थायोल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज अ बेसिकली इट हैज अ सल्फर इन इट. तो अगर जो डाइट पर्सन कंज्यूम कर रहा है उसमें बहुत ज्यादा सल्फर है तो वो समटाइम्स इट स्टार्ट कॉजिंग टॉक्सिसिटी इन द बॉडी एंड देन स्टार्ट कॉजिंग inflammation into the body, and that body cannot handle that excess amount of a sulfur and start causing inflammation in the body.
The next reason behind is that is if a person takes a high intake of mufa and pufa along with vitamin B6, that it is pyridoxine phosphate. तो अगर नॉर्मल डाइट से, नॉर्मल रिकमेंडेड से ज्यादा अगर हाई फैट डाइट ली जा रही है और उसमें म्यूफा और प्यूफा ज्यादा है, दैट इज इट्स नॉट ओनली कि एसेंशियल फैटी एसिड ज्यादा है, बट नॉन एसेंशियल एसिड फैट एसिड जो है वो भी ज्यादा हो रहे हैं। और वो जो उनका जो बैलेंस है, दैट परसेंटेज जिसमें म्यूफा प्यूफा होना चाहिए, अगर वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है और बॉडी के अंदर विटामिन B6 भी अगर एक्सेस अमाउंट में हो रहा है, देन ऑल्सो इट कैन लीड टू अल्सरेटिव colitis. And the last is if there is a highest relative concentration of arachidonic acid in the एडिपोज टिश्यूज, जो फैट कंज्यूम हो रहा है, बॉडी कंज्यूम कर रही है, वहां पे कहीं ना कहीं आर्किडोनिक एसिड का अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन हो रहा है, तो वो भी कहीं बार जो है नेगेटिव इफेक्ट शो करना शुरू कर देती है। ऑल्दो आर्किडोनिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करती है, बट अगर एक्सेस अमाउंट में उसको कंज्यूम किया जा रहा है, देन वो जो है बॉडी में एडवर्स रिएक्शंस कॉज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो है अल्सरेशन या फिर इन्फ्लामेशन अकर हो सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द latest research about the ulcerative colitis, that these can be some of the reasons behind the occurrence of an ulcerative colitis. Okay, now we have studied that what are the basic, what is ulcerative colitis, what are the major reasons behind it, and what are the signs and symptoms, that is how, what are the causes of these disease, and what are the signs that are shown by the body. But now how we have to manage the persons who have suffered from ulcerative colitis, because it is a disease in which the diet also plays a very important role. Now, if a person is allergic to milk and milk products, then we have to monitor that what kind of a food has to be given. And if the milk has to be avoided, totally avoided, or we can give some fermented form of a milk or not, then that also has to be monitored. Along with that, because the person is having a diarrhea, fecal loss बहुत ज्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन कंडीशन है, अनिमिक कंडीशन हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, साथ के साथ और बॉडी जो है वो डिलिबरिटीज की तरफ मूव ऑन होती जा रही है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए, पेशेंट को माल नरिशमेंट से प्रिवेंट करने के लिए जो है हमें प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट या प्रॉपर डाइटरी ट्रीटमेंट हैज टू बी गिवन टू द patient. So proper dietary management is important for maintaining a good nutritional status for these patients, as long-term management is generally required as the disease develops gradually and it takes a long time to cure this disorder, because the control or the management is not a short term disease, because now it is a chronic form of an inflammation. It will not subside in few days or few months. It takes a long time, even though years, it takes years to get proper correction of an inflammation. जो inflammation हुई है, जो अल्सर्स हुए हैं बॉडी के अंदर, उसको कुछ साल भी लग जाते हैं रिकवर होने में. So that's why for that, for proper maintenance of that, there should be a good nutritional status of the patient has to be maintained, so that slow and steadily the recovery can occur, that inflammation can be subsided, that ulcers that is occurring, that can be subsided, and the person can be prevented from this disease. Now, the dietary management and the nutrient recommendations need individual attention depending upon the extent of the disease as well as the problem of malnutrition exhibited. So, whatever the diet is given to the patient, we have to monitor that if the diet is given to the patient, the individual attention has to be monitored, as everyone does not show same signs, same problem and सेम पैटर्न ऑफ माल न्यूट्रिशन. किसी की बॉडी के अंदर ब्लीडिंग होगी, किसी की बॉडी के अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी. तो अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, म्यूकस ही ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो हमें उसको अलग तरह से उसको हैंडल करना पड़ेगा. एंड द पर्सन जिसमें ब्लीडिंग भी हो रही है, साथ के साथ डायरिया भी ज्यादा हो रहा है, तो वी हैव टू मॉनिटर इट or we have to handle it in a different form. So we have to see that what are the reasons, what is the extent of the disease, what are the problems that are occurring because of the ulcerative colitis, and then monitoring according to the conditions, to the signs and symptoms. We have to differentiate the diet requirement of each and every individual according to the conditions of the patient. So there is a wide range of tolerance of various foods observed from one patient to another, because
हर पेशेंट की कंडीशन सेम नहीं हो सकती. सो फॉर दैट ओवर हियर ऑल्सो हर पेशेंट को हम सेम तरह से हैंडल नहीं कर सकते, बट वी हैव टू मॉनिटर the signs and symptoms which are occurring into the body, how it is body food is reacting to the body of the patient, and then we have to monitor according to that condition. So we will the objectives of our dietary management should be that in acute stages, short chain fatty acids as well as glutamine are used to prevent the decline in the nutritional status. सबसे पहले जैसे ही starting पता चलती है ulcerative colitis की, that is it is in a acute phase, उस समय सबसे पहला जो है पेशेंट को माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट करने के लिए जो दो चीजें जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, दैट इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स दिए जाते हैं, बिकॉज yesterday also we have studied that and this in these patients sometimes the signs of steatorrhea also occur, that is fat malabsorption देखने को मिलता है. तो फैट ना प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होगा, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, so we have to rely on short chain fatty acids as well as a glutamine. Now glutamine भी हमने उसमें भी पढ़ा है glutamine का इम्पोर्टेंस, लाइक इन डायवर्टिकुलर डिजीज ऑल्सो, कि ग्लूटामाइन जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथनिंग में मदद करता है एपिथेलियल टिश्यूज जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में मदद करता है. सो फॉर दैट पर्पस ओनली हम जो है एक्यूट स्टेज में जो है ग्लूटामाइन सब्सटीट्यूट करते हैं पेशेंट को और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स देते हैं, सो दैट न्यूट्रिशनल स्टेटस ज्यादा डिक्लाइन ना हो. Then the another point that we have to monitor is to balance the fluid and electrolyte balance, because diarrhea is one of the major reason, or we can say a sign which is being monitored in ulcerative colitis. So we have to maintain the fluid balance as well as electrolyte balance. अगर इसमें disturbance आ जाएगी तो conditions और fatal हो सकती हैं. electrolyte imbalancement और fluid imbalancement की वजह से body acidosis की तरफ move on हो सकती है, and we know that the further consequences can lead to a coma stage also. So we have to balance the fluid and electrolyte. Monitoring has to be done and has to be corrected as early as possible. Then is nutritional status need to be improved, whatever the nutritional status is going on of a patient, obviously, because there is an infection, there is an inflammation, there is ulceration, bleeding is there, diarrhea is there. So we have to maintain the nutritional status. कहीं ना कहीं weight loss देखने को मिलेगा हमारे को, तो हमें पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसको इम्प्रूव करना है. जो वेट लॉस कंडीशन अकर हो गई है, वी हैव टू मॉनिटर दैट. देन फाइबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट द ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से फूड आगे एसिमुलेट नहीं हो पाएगा अगर फाइबर रिच फूड ज्यादा होगा. सो वी हैव टू प्रिवेंट इट, वी विल नॉट गिव अ हाई फाइबर डाइट टू द पेशेंट. Then diarrhea is to be corrected, whatever the medicines, whatever the treatment has to be monitored. We have to give it that along with the food intake also, that the food which can be given during the diarrhea, we have to give those so that diarrhea can be corrected in the patient. And then we can also take the help of a probiotic bacterial mixtures, because they provide relief in mild and moderate ulcerative colitis, so should be recommended. So we can give the probiotics also, because probiotics जो हैं वो healthy flora को की growth में मदद करते हैं, या healthy flora जो है microflora जो है उनको increase करते हैं body के अंदर, provide करते हैं बॉडी के अंदर, ताकि जो फूड का डाइजेशन है या बॉडी की जो एबिलिटी है फूड को मॉड्यूलेट करने की, फूड को एसिमुलेट करने की, एब्जॉर्प्शन करने की, वो बढ़ जाए और धीरे धीरे जो है बॉडी में जो है इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिले. सो प्रोबायोटिक्स एज वेल एज some kind of a prebiotics can also be used, should also be recommended to the patients who are suffering from ulcerative colitis. So these are the basic objectives that has to be followed for these patients. Now move on that how much energy is being required during the course of ulcerative colitis. अगर ulcerative colitis हो गई है patient को तो हमें कितनी energy देनी चाहिए? First of all, we'll start with this. The calorie requirement must be increased to restore the weight status as well as to maintain the idle weight. Body में idle weight भी maintain करना है patient का, और साथ के साथ हमें उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है, वेट लॉस जो देखने को मिल रहा है, वेट स्टेटस उसको भी मेंटेन करना है. सो वी विल कंट्रोल द बोथ थिंग्स, दैट इज हम उसका आइडल बॉडी वेट को मेंटेन करेंगे
और वेट लॉस अगर हमें दिख रहा है हम उसको भी मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे ताकि वेट लॉस ना हो, माल न्यूट्रिशन ना हो. देन वी विल compensate for the elevated BMR. जो BMR disturbed हुआ है पेशेंट का, हमें उसको भी कंट्रोल करना है, उसको भी मॉनिटर करना है. So we'll monitor the BMR rate of the patient because we all know that in diarrhea the BMR increases. Body is in a infectious stage, inflammation stage. So BMR has been increased in the body. So because of that, so body is in a catabolic state. तो उसको compensate करना है, उसके हिसाब से भी energy requirement increased होगी. Along with that, support has to be given for growth, especially if the age group is an adolescence. We know that it occurs at an early stage of adolescence. So if it is occurring at a adolescent age, over there we have to monitor that ग्रोथ फेलियर अकर ना हो जाए, जो ग्रोथ चेंजेस होने हैं एडोलसेंट एज में वो कोई सिस्टम कोई भी फंक्शन इफेक्ट ना हो जाए. सो फॉर दैट आल्सो वी हैव टू मॉनिटर इफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट हैज टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग द एडोलसेंट एज, we will give increased amount of energy for that also. So the energy requirement are based on the current BMI. That is अगर पेशेंट में ज्यादा वेट लॉस नहीं दिख रहा है हमारे को, तो उसकी करंट BMI को मॉनिटर करते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्यूट स्टेज है, देन वी विल गिव 30 to 35 किलो कैलोरीज पर केजी आइडल बॉडी वेट. अगर बॉडी के अंदर हमें माल न्यूट्रिशन के साइंस दिख रहे हैं पेशेंट के अंदर, तो हम जो है कैलोरी रिक्वायरमेंट 40 to 50 किलो कैलोरीज पर केजी आइडल बॉडी वेट तक ले जा सकते हैं अगर हमें सीवियर माल न्यूट्रिशन दिख रहा है. या फिर अगर एडोलसेंस एज है तो हम एडोलसेंट एज के अंदर कैलोरी कैन बी शिफ्टेड टू 40 to 50 किलो कैलोरीज पर केजी आइडल बॉडी weight. After that, let us see what is the protein requirement. What will be the protein requirement for these patients? Now, patients with ulcerative colitis lose a lot of protein. As to phases, we know that a protein loss occurs. Now, the persons who are suffering from ulcerative colitis are having a sign of diarrhea. Now, in diarrhea, the fecal matter जो पास हो रहा है बॉडी से उसके अंदर प्रोटीन लॉस बढ़ जाता है. So normally a patient with ulcerative colitis loses 4 to 8 gram of a fecal nitrogen as compared to the normal excretion, that is 2 grams. So normally a person जो है वो 2 grams of fecal matter या protein matter in the form of nitrogen loss करते हैं. But in ulcerative colitis patient because diarrhea है तो वो जो है amount double से भी 4 times भी हो सकता है. So it can lead to a 4 to 8 grams of loss. And in severe ulcerative colitis there can be 20 grams of nitrogen, that is roughly 125 grams of protein may be lost daily. So we have to monitor that how much protein is being lost from the body through the fecal matter, and monitoring that only we will decide the protein intake. Even though in these patients the serum albumin level is also low, so the proteins are necessary for the tissue synthesis, that is the inflammation or ulceration हुआ है उसके लिए हमें protein चाहिए, tissue healing के लिए protein चाहिए, and to compensate for the increased loss in stool. So thus there will be a liberal amount of high protein, that is 1.5 gram per idle body weight are needed to make the losses, or we can say to compensate the losses we need a great amount of a protein, that will be roughly 1.5 grams, or it can be increased in adolescent age. अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम प्रोटीन उससे भी ज्यादा कर सकते हैं because the requirement increases a lot in a severe condition, in a severe ulcerative colitis, as well as during the adolescent age. Emphasis should be on tender meat, fish, poultry, and eggs for those patients who are allergic to milk. Now, milk allergy is not always seen in each and every ulcerative colitis, so we have to see the condition of the patient. अगर patient tolerate कर पा रहा है milk, तो हम उसको milk दे सकते हैं. But during the starting phase, starting में हम पहले milk avoid करते हैं इन patients में, slowly हम monitor करते हैं that how much tolerance is there for the milk, and then only milk is recommended. So we have to monitor, is the person allergic to milk, because of that the problem is increasing or not, and then only milk will be included in the diet. Otherwise milk जो है totally avoid कर दिया जाता है for the patient suffering from ulcerative colitis. So direct milk किसी भी form में जो है नहीं recommend किया जाएगा.
Next is the amount of the fats. Usually, foods that contain fats in the form of your invisible or inherited fats are permitted, but not fried foods. So normally fat जो है भले ही वो visible हो या invisible हो, both are permitted, but we have to see that it should not be a fried food because fried foods जो हैं वो body के digestion को affect करना शुरू कर देते हैं. Along with that, liver dysfunction भी cause कर सकता है. So for that, we will avoid the fat. Thus, fat rich in medium chain triglycerides should be consumed as steatorrhea is predominant in ulcerative colitis. And if there are signs of steatorrhea also, then we will focus more on MCTs, that is medium chain triglyceride. That is, we can give the patient more amount of your cream or butter or coconut oil. These are some of the oils which are recommended for these patients if there is the sign of steatorrhea. Although this is one of the common symptoms which is being seen in these patients, so emphasis should always given on an medium chain triglycerides only and compared to the normal fatty acids. Total fat intake can be kept close to 55 to 60 grams, while visible fat intake should be less than 25 to 30 grams. So, visible fat should be between 25 to 30, that is 5 to 6 exchange can be given of your visible fat. In the form of invisible fat, we can give up to 60 grams of fat can be given. Next is the source of the carbohydrates. They form the easily absorbable source of the energy. So carbohydrates can be given, but we have to monitor that bulk providing vegetables are restricted. So the fibers rich vegetables has to be avoided in these patients, as we know that fiber will not be can lead to obstruction in these patients and will not be easily digested because of the colonial part, because body में जो है inflammation हुई है और colonial part जो है disturbed हुआ है, तो large intestine disturb होने की वजह से fiber नहीं digest हो पाएगा properly. So for that we avoid the bulk producing vegetables. Sugars and starches can make the increased calorie intake. So simple sugars can be included in their diet, or simple starches can be included because they are less in bulk producing, उनमें bulk नहीं होता और energy dense करने में मदद करेगी. That is malnutrition को prevent करने में मदद कर सकती है if there is a high amount of energy is required. Next, we move on to the fiber. Now, fiber, although we know that eliminating roughage seems to be a better effect on preventing the relapse of the disease, a low residue diet may be given during an acute attack to prevent severe bleeding during diarrhea. So, emphasis eliminating the roughage जो है basically fiber जो है हम eliminate करते हैं, नहीं देते हैं ताकि जो है वो disease बार बार relapse ना हो body के अंदर. But low residue diet, that is a diet which is low in fiber. The emphasis will be given on a soluble fibers. Bulk producing or insoluble fibers जो totally avoid किए जाएंगे. So thereafter some degree of fiber restriction is generally needed in many ulcerative colitis patients who do not tolerate raw vegetables, or some persons जो है वो totally raw vegetables भी digest नहीं कर पाते हैं. So we prefer to the patient एक्यूट फेज में अगर पेशेंट आया तो हम बेसिकली लो रेजिड्यू डाइट प्रेफर करेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो, डायरिया ठीक हो जाए एज वी गो फॉर द डायरिया कंडीशन ओनली. एंड देन ऑल्सो वी सी कि रॉ वेजिटेबल्स ना दी जाए क्योंकि वो भी कई बार अटैक्स को इंक्रीज कर देता है. It may cause further damage to the already inflamed mucosa. So the forms in which vegetables are given can be changed. So raw vegetables को हम cooked form में या fruits को भी हम stewed या cooked form में convert करके then it can be given. All kind of irritants as well as spicy food should be strictly avoided, as we do for the peptic ulcers also. Ulcers के अंदर we know that irritants या spicy foods नहीं tolerate हो सकती है, ulcers जो हैं वो irritation cause करना शुरू कर देते हैं. So that also has to be avoided during ulcerative colitis also. Along with that, raw vegetables, spicy or irritant foods should be totally avoided. तो किसी भी तरह का raw food, spicy या irritant food जिसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर इरिटेशन हो सकती है, मींस एक्सेस एंजाइम सिक्रीशन हो रहा है या एक्सेस एसिड सिक्रीशन हो रहा है बॉडी के अंदर जिन फूड्स की वजह से, या फिर पर्सन की टॉलरेंस पावर भी हम मॉनिटर करेंगे कि कौन से फूड जो है उनके लिए इरिटेंट कॉज कर सकते हैं. देन वी हैव टू मॉनिटर दैट एंड देन
We have to avoid these foods so that they does not cause any kind of irritation in their body. Next is the vitamins requirement. ऑल्दो जब बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डिस्टर्बेंस होगी, रॉ फूड्स नहीं हम दे पाएंगे, इनटेक डिसबैलेंस हो रहा है बॉडी के अंदर, स्टिटोरिया दिख रहा है, तो फैट इंटॉलरेंस देखने को मिल सकता है बॉडी के अंदर, स्पेशली फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस ज्यादा हो रहा है तो वाटर सॉल्युबल विटामिन भी डेफिशिएंसी में हो सकते हैं। सो कमर्शियली मल्टीविटामिन प्रिपरेशन शुड बी administered orally, especially the ones needed for the healing process. So most probably एक multivitamin tablet जो है वो पेशेंट को दी जाती है, as we know, for inflammation, antioxidant rich हमें चाहिए जो इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने में मदद करें, दैट इज विटामिन सी, योर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सारे विटामिन जो हैं वो चाहिए हैं इन अ प्रिस्क्राइब, दैट इज आरडीए से अबव अमाउंट में चाहिए, ताकि हीलिंग प्रोसेस अच्छा हो सके। और साथ के साथ जो है कैलोरीज और प्रोटीन्स की जो यूटिलाइजेशन है, दैट इज बी कॉम्प्लेक्स जो है बॉडी में कैलोरीज की जो हायर अमाउंट ऑफ कैलोरीज हम पेशेंट को दे रहे हैं उसके यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। सो ऑल फॉर दैट पर्पसेस वी सप्लीमेंट अ विटामिन टैबलेट, ओरल विटामिन टैबलेट्स आर गिवन, सो दैट जो प्रॉपर बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं डिपेंडेंट हैं डिफरेंट विटामिन में, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन ना आए और बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज कैलोरीज और प्रोटीन्स का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होता रहे। Next, about the minerals, let us move on to the minerals. Mineral losses may be marked and unless replaced, they contribute to a fatal outcome. Obviously, minerals losses भी ज़्यादा हैं, सोडियम पोटेशियम लॉस होगा बॉडी में से ज़्यादा, आयरन लॉस होगा बिकॉज ऑफ द ब्लीडिंग, तो हमें उसको भी लॉस को भी मार्क करना है और उनको भी जो है फेटल कंडीशन ना कॉज हो जाए उसकी वजह से, कुछ मिस हैपनिंग्स ना हो जाए उसकी वजह से, हमें उसको भी जो है वो मॉनिटर करना है। सो पेशेंट्स विद moderately advanced ulcerative colitis passes a large amount of over 400 ml of fecals per day and thus may lose considerable amount of sodium, that is 6 grams of sodium per liter of a stool. So NaCl from a stool, from the stool, so thus oral sodium intake is increased by added salts, sprinkling additional salt in the फूड। तो हमें सोडियम जो है अगर स्टूल ज्यादा पास हो रहे हैं, बहुत हायर अमाउंट में स्टूल पास हो रहा है पर्सन से, so we will substitute an additional salt intake into the patient so that electrolyte balance जो है वो maintain किया जा सके। Next is the important minerals, your potassium. Potassium losses are also estimated to be around 30 m equivalent per 2.2 gram of potassium chloride per liter. So this is also an estimate कि इतना प्रोटीन जो है पोटेशियम जो है वो लॉस हो जाता है, and usually high excretion of potassium even 167 m equivalent per day may be sometimes encountered, कि इतना ज्यादा हाई अमाउंट में पोटेशियम लॉस भी हो सकता है, and because of that there can be weakness, hypotonia, abdominal distension and even changes in the electrocardiography, that is ECG की values में भी change आ सकती है। as we know that अगर potassium body के अंदर लेवल जो है बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो हार्ट सडन कार्डिक अरेस्ट कॉज कर सकता है, तो कार्डियक डिस्ट्रॉफी स्टार्ट होनी शुरू हो सकती है। सो वी हैव टू मॉनिटर द इनटेक ऑफ द पोटेशियम आल्सो, एंड अगर बॉडी में जो है पोटेशियम लॉस ज्यादा, सॉरी, अगर फीकल लॉस ज्यादा हो रहा है बॉडी में से, एक्सेस हो रहा है एज इट इज सीन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट, सो दे शुड बी सप्लीमेंटेड, पोटेशियम रिच फूड्स तो देने ही है, अलॉन्ग विद दैट पोटेशियम क्लोराइड जो है वो सब्सटीट्यूट किया जाता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट्स का इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम सिट्रेट में बी हेल्पफुल, सो दैट जो इतना हायर अमाउंट में जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जा सके। So this is a substitute, it is a form of a syrup which is given orally to the patient so that potassium balance जो है वो maintain हो सके। Along with that, elimination of milk हम totally avoid करेंगे for these patients, and we all know that roughly there is a requirement of 400 to 800 grams of calcium daily, and protein to calcium ratio has to be maintained for optimum utilization। प्रोटीन भी प्रॉपरली तभी बॉडी के अंदर यूटिलाइज होगा, बॉडी के अंदर जो है काम कर पाएगा, बोन्स के अंदर जो है वीकनेस लाने से तभी प्रिवेंट कर पाएगा अगर कैल्शियम प्रॉपर होगा, तो हमें उसको भी मॉनिटर करना पड़ेगा। वी हैव टू substitute some amount of a calcium supplements for the patient so that ऐसी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, स्पेशली एडोलसेंट एज के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो।
Along with that, iron by the oral route is usually not well tolerated. So daily about 30 milligram of elemental iron is given, although it is not easily tolerated by the patient. So in the form of an elemental iron. Elemental form is that is pre-digested form of an iron. That is iron tablets directly ना देके ना ferrous sulfate या ferric sulfate की form में ना देके उसको और further converted form दी जाती है in the form of some syrups, और ऐसी form जिसमें directly वो absorb हो जाए pre-digested form में दिया जाए, so that iron absorb हो जाए और जो anemia होने के chances है वो ना दिखें. अदरवाइज देयर विल बी अ चांसेस कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ सकता है इन पेशेंट्स में. सो वी शुड supplement oral route, and through oral route elemental iron should be supplemented roughly around 30 milligrams, so that there will be no signs of anemia occurs. अगर वो हो जाएगा तो obviously problems और aggravate हो जाएंगी, and then blood transfusion will become necessary for these patients. Next is that is your fluid. The fluid intake has to be also monitored, as there will be excess loss of the fluid through the diarrhea. So a liberal intake of a fluid should be given to prevent dehydration, and this passage of at least 1200 ml of the urine indicates that the patient is well hydrated. So most probably the intake of the fluid is monitored with the help of the urine output. If the urine output is okay for the patient, it does not give extra fluid. But if a fluid intake is, that is urine output is less, then we have to substitute with the extra fluid that has to be given for the patient. So this is all about the ulcerative colitis that we have to monitor.